Yeah. If you like come a little bit more closer, then it's fine. Otherwise, I'm yeah. yeah. The mic's literally like in front of me. शायद कोई आवाज में मसला हो रहा हो, probably why. I'll try speaking louder. All right, perfect. Okay, so um, you are still studying in IOBM, right? Yes, I graduate next year, inshallah. And what is your plan after that? It's a little all over the place because I initially wanted to go into investment management, but right now I've been thinking about going into developmental economics. But the problem is there are no avenues for or no places that entertain economics as a field or allow people with this degree to work in policy making. I don't have exposure towards policy making, and I'm not sure if it's the kind of field I'm going to like going into. So I'm kind of still confused. Where exactly do I want to go? I'm thinking I might intern at a think tank just to get exposure. I've tried emailing them, but I haven't had any response in terms of policy making, and um, hence I'm just still here. I'm willing to experiment and see where it is that I'd be more happy working in. So, so you're saying that you want to be a part of a policy making, right? Uh, Probably I'd like to go. I like to do one stint there and see if it's the kind of thing that I'd be interested in. Oh, okay. So you're Because still yeah, exploring, right? So you're not sure about what exactly you want to achieve. yeah, yeah. All right, that's fine. Okay, so let's talk about. So, do you have any other further education plans after this or not? Yes, I do, but I'm going to take a 4-year break, work, save up for my master's before I get a master's. All right. Okay. So, tell me about your experience in AKD. What exactly you were doing? So I basically had to ensure that so we had a list of clients that we were previously dealing with, and we lost contracts with them, or yeah, they basically withdrew their portfolio from AKD, and they went to other avenues, or they decided to withhold their management of their portfolios with AKD. So I was required to get hands on information on their financial department and who it is that is dealing with their departments, speak to them and set up meetings with them. And jiski wajah se I did get in contact with Colgate and Palmolive's CFO. I set up meetings with them. I set up meetings with ICI, and I was there for about 3 months, and that's what I did. And other than that, I was required, because I was there for a long while, I requested them if I could learn a little about research, the research department that they had. So they let me learn about the kind of impact their stock prices have on the market, the kind of work that they do, and the kind of for example, what it is that they do that has to have an impact on the stock prices in the market. I was required to update the comparative financial models. They had Islamic income funds and aggressive income funds that I had to update, and they What do you basically mean by update? I mean to say, how do you updating their financial models? Do you have access to their financial models? they did give me financial models that were pre-prepared. I was a fresh finance undergrad then. I only had my financial management course then, so they basically made me a financial model, or like it was pre-prepared, and they just told me, "Okay, yeah, this is XYZ things, and you just need to update all the latest information in them, like And update, for so, example." yeah, Yeah. can you speak up a bit, Anam? And so, tell me exactly what was the financial model, and what was Uh, what's your okay, so if you could allow me 2 minutes, let me open it in front of me and
No, just give me Run. the. You don't have it. I'm gonna say in your mind what exactly you were doing. No, no, it was basically spreadsheets with data from their manager reports, that all the mutual funds that they update their manager reports, right? I forget that, I'm forgetting the term exactly that it was. Okay, they had to extract, I had to extract information from that and update the models with that. And these are comparative financial models because they weren't just for AKD, they were for other brokerage houses. And I had to write in information, for example, um, I okay, I'm All right, that's fine. No issues. okay, Yeah. yeah, yeah. So basically, I'm gonna say you're not aware currently what exactly you did, right? Yeah, but it was mediocre work. It wasn't actual, it wasn't learning much. It was just updating Excel sheets. All right. So what do you think? You still wanna go to AKD? I wouldn't exactly want to go to AKD, but I prefer going someplace else. But learn to do more in finance and apply that. All right. So as you mentioned that you are doing your degree in finance and economics, right? Yeah, yeah. Okay. So tell me about the equation of balance sheet. What is the balance sheet equation? Um, Assets plus credit and okay, my bad. I do not know the equation for the balance sheet. I'm ill prepared for that. No, but I'm gonna say you have worked on balance sheets, right? Those weren't balance sheet. These are in No, fund I'm gonna manager say in your reports. courses. I mean, Yeah, you, yeah, 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 because you are at almost in the. You already just done your 3 years in this degree, right? yeah, 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 So you should be aware of the balance sheet equations. What is yeah, it? yeah, yeah. Very Okay, simple, so right? It's not a. yeah, it's equity plus liabilities equals to assets. Yeah. Okay. So can you explain that? What exactly does that mean? So the equity side contains the stockholders' equity and share capital, basically the share capital and the retained earnings, whereas which is plus the liabilities, which contains the current liabilities and the That's fine, but I just need yeah. to understand like what is the equation. Just give me like two, 3 words answer. What does that equation means to you? What is trying to explain? That like इट इंडिकेट्स कि जो जितनी भी कंपनी की इक्विटी है और जितनी भी चीजें वो ओ करते हैं किसी को, वो ये दोनों चीजें जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल वो वैल्यू आती है जो पूरी कंपनी के एसेट्स की वैल्यू होती है. दैट इज वो माय किसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ करते इट. हैं? आई एम सॉरी व्हाट. किसको करते हैं ये लोग? फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी कोई जैसे लाइबिलिटीज में हम सब सेक्शंस में जाएं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है और करंट लाइबिलिटीज होती हैं. तो अब फॉर एग्जाम्पल इफ दे ओ पेमेंट्स टू XYZ वेंडर्स दैट आर आउटसाइड, तो इट्स गोइंग टू बी दैट, या फिर फॉर एग्जाम्पल देयर सम अमाउंट दैट दे आर सपोज टू पे टू other people for example their raw materials या कुछ या That's fine, but I just need yeah, a quite a very simple 2 3 word answer, right? What exactly yeah. that balance sheet equation asset is equal to liabilities plus owner equity? What does that mean? I mean, I know This the yeah, internal or like sub parts of it, right? yeah, But this is my only understanding of this. I okay, don't think I yeah, I don't think I can so further expand into it. Yeah. all right, so okay, so tell me about three financial statements. um income statement, balance sheet, and cash flow statement. All right, can you explain income statement?
इनकम स्टेटमेंट में जितनी भी कंपनी की जितनी भी सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं वो सारे कंटेन करती है. जो बैलेंस शीट होती है उसमें सारे जितने भी हमारे ये the same thing that I discussed कि assets No, होती हैं, just equities explain या the, walk me through the income statement. Just give me the items of income statement. अच्छा तो Yeah, इनकम because स्टेटमेंट में Anam, I स्टार्टिंग don't में need रेवेन्यू like होता a है. generalized answer. I need a like a या very specific answer, right? Just give me the line items of income statement. Just walk अच्छा me through income statement, right? ओके सो इनकम स्टेटमेंट में शुरू में वी हैव आवर जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं एंड देन व्हाटएवर प्रॉफिट दैट वी मेक माइनस ऑल द लॉसेस दैट वी आर इनकरिंग और फिर उसमें से नेट होकर हमारी इनकम आती है जो कि इज अ फ्री कैश दैट द कंपनी हैज एंड इज लिक्विड एंड इजंट ओड टू एनीवन. No, but these are okay. These are not the items, by the way. Okay, Okay, what do you so mean by items? Like, just give me an example of a P&L of a Toyota. Like, what kind of items will be there, right? sorry, can you come again? Did you say Toyota? Any company, Coca-Cola. अच्छा. So what will be the Um, P&L looks like? revenues में हम जितनी भी bottles की sales हुई होगी that will constitute of the revenue वाला section All right. and expenses में उन bottles की बनाने की cost, plant Yeah, की yeah, cost. that's fine. I'm just don't Yeah, go into the explanation. yeah. Revenue expenses, what happened then? उसके बाद we get our gross profit और gross profit में से we minus our उसके बाद losses जितने for example if the company is Can you share your incurring screen, by the way, Anam? how do I share my screen? There's a share option on you. There's a green button there, right? On the bottom. Wait, okay, wait. There is a green button. On the bottom of the Zoom. Wait, let me try figuring out how to do this. Okay, can you see now? Nope. Okay, that's weird. Yeah, now it is starting. All right, that's fine. So now, yeah, so you were saying that uh, revenue minus expense is giving you a gross profit, right? What Yeah. happened after that? उसके बाद हमारे पास जितने या तो जितने losses होते हैं वो minus करेंगे and What do you then mean by losses? I don't understand. Why are you keep saying it losses? What is losses uh, here? How do you I find? think I'm Yeah. getting something wrong here. I'm majorly getting something wrong here, but uh, if All right, for that's fine. example, No issues yeah, here. Okay, so what about yeah, cash flow? What exactly is cash flow for? कैश फ्लो जितनी भी कंपनी में लिक्विड कैश हम रखा होता है द कैश द लिक्विड कैश दैट द कंपनी कैन यूज एंड इजंट टाइड इन अदर थिंग्स उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट उससे बनती है मतलब उससे जनरेट होती है. No, I didn't get it. Can you explain it one more time? So there are I think three components of the cash flow. एक तो operations से होती है, एक investment से cash flow statement बनती है और एक financing की cash flow statement होती है. And Are you saying that there are three cash flow statements? no, three components of the cash flow All right. statement. Okay. Okay, and जो cash flow from operations बनेगा उसमें it constitutes of all the cash that comes from Yeah. running the Yeah. I company. can't hear you. Can you speak a little bit up, please? Huh. Okay, the the cash flow in the operations component contains of all the cash that is generated from the operation of the company, what the regular day-to-day operations that happens uski for example depreciation या उनमें additions वो add होते हैं and All then right. Okay. yeah. So just tell me about depreciation. What is depreciation? Depreciation is when is the amount is the decay in the value of the
of an asset or instrument over time, uh, in its value, cash value, due to time. All right. So, and how do we account depreciation in P&L? uh, in the income statement. That is correct. Yeah. um, we add it in the income state I mean, we add it in the income statement. I'm not What do you mean entire by I'm that? Edit. um I'm sorry, I do not entirely know that. Like, I'm not very good at it. All right. But Yeah, I it's mean to going say to be you were counted as talking an about expense. depreciation, but you should know like I mean to I know say what depreciation is, but I figured that that's would be fine. That's counted fine. as an Okay. expense. Okay. That's fine. Okay. Give me an example of a project that you have done that involve heavy analytical thinking. um I Okay. I recently Yeah, you're okay, so I did losing your two voice. I'm projects. losing your voice. I don't know. Can you just increase your Can you mic? hear me now? Yeah. 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 Now it's better. Okay. So I did two projects. One for was for Pakistan economic policy, and one was for psychology that I felt like required heavy analytical thinking for me. Okay. What For exactly was Pakistan, analytical thinking? uh, and for monetary policy as well. Analytical thinking is when you have to analyze and use your brain to figure out what is happening. For example, if we observe a certain change in whatever, for example, अगर हम monetary policy को देख रहे हैं and we see कि जी taxes बढ़ा दिए हैं, तो उसकी वजह से क्या affect आएगा economy पे, that is primarily what our side of the analysis will be. All right. That's fine. Okay. So tell me what motivates you. Um, I struggle with motivation. I don't think it's primarily motivation. I feel like it's more discipline than motivation. It's never really motivation. It's just discipline. No, but what is I mean, there should be some motivation. What exactly drive you? I mean, what is the driving force behind you? What is the Uh, what motivates you in general? um, if Discipline is I'm fine. I mean, discipline is just a discipline, right? But what yeah, is the motivation? I think okay. If it's something that I've observed, I tend to do better and get motivated better when I'm in a surrounding where people are doing really good. If the people around me aren't putting in extra effort, or I get it affects me in turn, and I don't end up doing as well. So I primarily feel my surrounding motivates me more than anything. So if it's a bad surrounding, then I mean, to say you will be Can motivated you there. repeat again? What did you say? If it's a bad surrounding, then you will be motivated there as well. No, unlikely. Okay. But I try to develop a thick skin and not get affected if I'm around an environment where I know I will get affected. So I try to do as much as I can and not. No, but Uh, still, I didn't get your motivation. What motivates you, right? What is when you wake up in the morning? What is the thing you really want to do in your life, right? Or what things make you really, really excited, and you can do that thing day and night without taking any breaks? What is that? um, okay, so two things. One of them is the ability to. Okay, I tend to read a lot. I'm uh, So, so what is the last mm, thing you read? I'm currently reading The Shoe Knight by the guy who created Nike, and What is it about? it's it's his story of how he created Nike and what happened initially and how did he get around to doing it. But I'm just starting, so When it's what him taking a trip around the world okay, and what is finding himself. uh, what was the read before that?
Dozakhnama And what is that by about? Rabi Shankar Lal. It's a book between it's a book that basically is poetry, philosophy, and Urdu literature. It Just expands on. summarize the message. What is the message of the book? It's a conversation between Mir and Manto in their graves. They're reminiscing their old times. All right. Okay. Tell me about your weaknesses. Uh, I s- tend to stutter a lot. Uh, Sorry, can you say and it again, please? wait, give me 2 minutes. I'm moving somewhere where I can speak. Um, I tend to stutter a lot and get like I can बहुत आसानी से जो है ना I lose my confidence. Anytime that I know for sure ke is I do not I'm not going to, if I anticipate that I'm not going to do well, yeah, I find the other person intimidating or the environment intimidating, I'm going to lose my confidence really fast. And other than that, my other weaknesses is I struggle a lot with trying to finish projects. Like I will start a lot of them, but I will not be able to finish them. And even though I will finish them eventually, but it will take me a comparatively longer time to finish them because I want to make sure that I do everything right in them, which is terrible in my opinion. All right. Tell me about one thing you are proud of. Um, one thing that I'm proud of is that I've been able to. Okay, I have a mediocre GPA. My understanding of a lot of subjects is what I've studied on my own, and not exactly related to what I've been taught. But regardless, I've ensured that even if I lack there, I've tried getting as many experiences that I can. I've even though I've interned, and then other than that, the society I was in, I was in the business development uh, uh, department. So I had to often meet journalists, yeah, pair CSR departments. So I had a lot of exposure in that regards. So that's one thing I'm really proud of being able to like do well. All right. Okay, let me give you a scenario here, right? Yeah, So, if you are in a dark room and you can't see anything, right? yeah, And you have like a six pair of black socks and six pair of gray socks, yeah, right? So, and you can't see anything, and yeah, everything, all the socks, all the pairs are mixed up. yeah. So, how many socks you need to take out to make a perfect pair? If I could you okay, so I have um Six pair of black socks and six pair of gray socks, and you can't see yeah, anything. Everything is mixed up, right? yeah, So, and you're in dark. So, how many socks you need to take out in yeah. order to get the perfect pair? Uh um Probably 12, but out of even that, the probability of succeeding would be uh 2 out of uh s- 12. That's what I feel like. No, I'm So just I'll probably it's not about feeling, right? It's the no no answer. I mean like the Yeah. probability of succeeding in making the perfect pair according to me would be 2 out of 12. No, I'm not getting. कितने socks आपको निकालेंगे अपने हाथ में कि एक perfect pair बनेगा? I will try to take out all the socks जितने भी हैं जो कि 12 हैं, 6 ग्रे और 6 हाँ. but no, wait, my bad. These are six pairs of black socks and 6 pairs of uh Gray socks. gray So how socks. many So that's socks 40. you will need That's in your hand to make a perfect pair? I will need 24 socks because that's the total number of socks that I have. Okay. So yeah, yeah, But galat. I mean, this is the wrong answer. I'm asking about a one perfect pair, and you're oh, talking. two, two.
No, that's the wrong answer as well. Acha ji. Okay. So, okay, that's fine. Okay, Okay. so let me share my screen. Can you stop sharing your screen? Yeah, yeah, sure. Okay, excuse me. So these are like three financial statements, right? Yeah. Okay, so tell me what happened if it changes depreciation as you mentioned, right? So if Yeah. you increase the depreciation here by 100, what happened into Uh, into all three? What is the impact of this certain change if we increase depreciation from 100 to 200? What will be yeah. the impact of in income statement, in balance sheet, and in cash flow statement? Cash flow statement. Yeah, walk me through Uh, it. so if the depreciation is 200, so it's to stock based, and then can you go a little down in the income statement? तो हमारे um, that's 200. Here you go. Yeah. Uh, and three, If we 500. increase this by 100, which is around Yeah. 200, so what will be the impact of income statement, balance sheet, and cash flow? So अगर if अगर depreciation बढ़ जाएगी तो हमारी what part of the income statement is the depreciation ये account depreciation है ना? accounted for? Yeah. So but just increase the depreciation by 100. What will be the impact on income statement, balance sheet, and cash flow? uh, the cash flow will नहीं, obviously पहले income decrease. statement बताए ना आप. I'm confusing the income statement इसलिए I haven't answered that because I can see the total operating expenses will be मतलब पहले ये बताएं कि depreciation increase होगी तो क्या impact क्या आएगा operating income पे? ज़्यादा होगी, कम होगी? कम होगी. All right. And say pre-tax income पे क्या आएगा? No, sorry. Depreciation ज़्यादा होगी तो total operating expenses ज़्यादा होंगे. Operating Revenue, expenses तो ऊपर है, यहाँ पर है. yeah, okay. Operating income कम होगी, लेकिन obviously pre-tax income भी कम होगी. अच्छा. और in turn net income भी कम होगी. ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा? बैलेंस शीट में depreciation तो included है नहीं. But the net income will is not there either. जो cash flow statement होगी उसमें depreciation बढ़ने से the net income will decrease obviously, and the cash flow from operations will decrease as well. Yeah, that's what I can tell. All right, so you showed in depreciation. You just tell me what happened with the if we increase the revenue on three statements. If we increase the revenue on all three statements, तो net income, for example, income statement में बढ़ेगी, cash flow statement में जो हमारा at the end of the whole thing जो cash flow बचेगा वो ज़्यादा होगा. Balance sheet में कोई effect नहीं आएगा because revenue उसमें account होता नहीं है. अच्छा, तो ये बताएं कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे लिंक होती है? इसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेशंस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है उसमें for example this changes in operating assets and liabilities, it contains a large amount of the balance sheet के liabilities and assets. नहीं, मुझे नहीं the समझ आ रहा. the accounts receivable the accounts receivable जो cash flow statement में लिखे हुए हैं, changes in operating assets and liabilities में, these are from current assets, or inventory is from current assets, the accounts payable is from the current liabilities section. नहीं, मैं just I know about it, but Yeah, just tell me. आप ये said कि बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आएगा. वो क्या no क्यों? balance sheet में revenue का कोई फर्क नहीं आएगा. नहीं, बैलेंस शीट में किस चीज का फर्क आएगा फिर?
जितने भी एसेट्स में अगर चेंज आएगा या लाइबिलिटीज में या इक्विटी में, सिर्फ उसी उनमें से किस उनमें उनकी उनमें चेंजेस आने की वजह से बैलेंस शीट में फर्क आएगा। मैं आपसे यही तो पूछा, आपके सामने मैंने सब कुछ खोल के रख दिया है। जस्ट आस्क जी एग्जैक्टली क्या किन लाइन आइटम्स में चेंज आएगा। ये तो आप जर्नलाइज कर रही हैं विदाउट एनी, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। या ऑलराइट, आई एनीवेज सो चलें ये बताएं कि कैपेक्स कैपेक्स अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उससे इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो कि क्या फर्क पड़ेगा इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर चेंज करने से। अच्छा सही है। Okay, so I'm gonna say I was thinking, I was just generally discuss for the first half an hour, and then we can go into technical side in the next या 30 minutes, right? But या yeah, I'm asking you very simple questions, but you're not able to answer this. या So, and तो यार ये तो टेक्निकल साइड तो बहुत आपकी वीक है यार, ये तो बहुत ज़्यादा। या I'm just these are very very simple questions, right? तो आप तो या इसमें, and then you mentioned that you worked on financial models in AKD as well. या तो उसमें तो आई मीन से यू शुड बी, यानी कि ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें। सेकेंडली जो आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स जो आपने वो दिए हैं उसके उसमें भी थोड़े से इश्यूज हैं। शुरू में आपने वॉक ओके थ्रू दिया था, और जी लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो सवाल पूछे गए हैं उसमें आर यू आई मीन से काफी उस पे आपकी वर्किंग जरूरत है यार। और ठीक है ओके। टेक्निकली तो बिल्कुल ही आई मीन से टेक्निकल कोई बंदा बैठ जाए तो वो तो 1 मिनट में यू विल बी इज गॉन। या गोना मंच मी आउट। या नहीं, आई मीन से सिंपल यार, टेक्निकल फाइनेंस है, इसमें तो आप कोई मार्केटिंग और एचआर थोड़ी है कि कहानियां कर सकते हैं। या फिर बिल्कुल इसमें नंबर गेम होता है। आपको अगर मैं डेप्रिसिएशन 100 से ला रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ डेप्रिसिएशन हिल लिया है। सही है। फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर डेप्रिसिएशन 100 से हम इंक्रीज करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग इनकम 100 से डिक्रीज हो जाएगी। आपकी नेट इनकम जो है, क्योंकि टैक्स प्रोविजन 40% या 30% जो लेते हैं, तो उस लिहाज से आपकी नेट इनकम जो है 40 डॉलर्स कम हो जाएगी, राइट। तो वो जो नेट इनकम जो है आपकी जाके फ्लो होके जो है कैश फ्लो पे जाएगी। वहां पर आपका जो नेट इनकम का हिस्सा जो कैश फ्लो का है, लेट मी गिव शो यू हियर, राइट। या So just to give you an idea, right? So I या just made this template for you, से हम आप साथ बैठ के आपको जब आप changes करें, right? So या let me tell you, if we change 100 here, right? या So this is 200, ये old है और new हो गया, right? अब ये with the ठीक है। changes है, तो या 100 यहाँ पर फर्क आया, 200 हो गया यहाँ पर। ओवरऑल एज ए मेंशन कि जो है ना आपका नेट इनकम जो है आगे 240 हो गई, सही है, क्योंकि टैक्स सही है। प्रोविजन आ रहा है यहाँ पर। या 240 नेट इनकम यहाँ फ्लो के आई, या और ये कम हो गई डेप्रिसिएशन आपकी, क्योंकि ये कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो यहाँ पर कैश आपको फर्दर आ गया। 100 से 200 हो गया तो 100 इंक्रीज हो गया। ओवरऑल या इनिशियल लेके आएंगे तो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है टोटल वो जो है 590 हो जाएंगे, राइट। क्योंकि ठीक है। आपका 240 यहाँ से 60 का इम्पैक्ट वहां से आया और 100 का यहाँ आया, तो 590 फ्लो हो जाएंगे कैश बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पर आपकी कैश फर्क आएगा, राइट। कैश फ्लो सही और है। कैश में वो फर्क आएगा, तो 5 से 590 हो जाएगा। तो देयर इज अ 40 डिफरेंस हियर। यहाँ पर सही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप देखिए, ये 100 है। तो अब या इसके बाद जो है आप यहाँ पर जब रिटेन अर्निंग देखेंगे या अपनी, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्योंकि वो डिप्रिशिएट हो रही है, वो फ्रॉम 200 टू 100, यहाँ पर ये इम्पैक्ट आ गया। और यहाँ पर रिटेन अर्निंग में आपकी 400 टू 340 जो है ये आ गया। सही और इस तरह ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन फ्रॉम 1190 1190। तो बैलेंस शीट जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी हो गई, सही। सही है। ओके तो आई वाज एक्सपेक्टिंग इस किस्म का आंसर आपसे, सही क्योंकि है। आप बिल्कुल लास्ट ईयर में अपने उसमें हैं। या तो आई मीन दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट।
Yeah, yeah, तो these are, लेकिन I agree. सो ये सारा वो है। तो एनीवेज लेकिन ये है कि कोई इशू नहीं है यार ना, इसमें मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ इसके अंदर। एक तो आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसी है ये बताएं। It's not very good. I still have to learn to make financial models. मतलब I do not खुद मुझे खुद नहीं आते. Even the financial models that I received were prepared beforehand. ओके, तो आपने Yeah. खुद ही अभी तक एक फाइनेंशियल मॉडल भी नहीं बनाया आपने? मैंने फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाए, एक भी नहीं बनाया। Nope. तो आपके ये 3 साल गुजर गए आपके, हाँ? जी 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 जी। I have been required to make econometric models though, but not fine. I wouldn't classify the ones that I made in basic courses or rudimentary courses as financial models. अच्छा, तो इकोनोमेट्रिक्स पे आपने मॉडलिंग की हुई है आप कह रही हैं? Yeah, I just picked econometrics this summer and I made one econometric model uh, that I was, if I can share my screen, wait. Okay. करें, शेयर करें। Yeah. So this is one that has GDP growth, key percentage change and exchange rate change, and inflation along with global crisis as a dummy variable. Or just pay I performed a couple of tests. I'm still struggling with making sure that this is a perfect model, but it is a model. It is one model that I made. So yeah. अच्छा, Yeah. ऑलराइट। So just give me a second here. अच्छा, let me show my screen to you, right? Yeah. किधर है? Stop करें आप शेयर? Okay. Okay, so let me give you an example कि अगर आप मेरे पास आएंगी तो I will teach you what. So I will, Same. first of all, you will be very very clear in every single concept, right? From three ठीक है. क्योंकि these ये तो हर जगह काम है, ये तो these are the bases, right? तो सही है. इसके तो आप ये आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और फाइनेंस सही के है. अंदर ये होता है कि इज अ नंबर गेम, नंबर मैच होना चाहिए, अदरवाइज सारी बातें इररेलेवेंट है। सही है? सही है. सही वो है. मैं आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ टू डील विद इट, हाउ टू मेक, यानी कि एक एक आपकी जो जो एक एक लाइन आइटम है उसको क्लियर करेंगे, उसके आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इस किस्म का जो है 3 स्टेटमेंट जो है मॉडल आप पूरा बनाएंगे, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, और इसमें आप जो है जितनी ईयर्स की भी 10 ईयर्स 15 20 ईयर्स की प्रोजेक्शंस करना चाहें, ये पूरी Yeah. प्रोजेक्शंस हम करेंगे, फिर बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस हैं और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, राइट? सही तो है. दिस इज द सही है. कंप्लीट 3 स्टेटमेंट, यानी कि पूरा फाइनेंशियल मॉडल है जो कंपनीज के अंदर यूज होता है फोरकास्टिंग के लिए और जो है बजटिंग के लिए। और इसकी बेसिस पे हम लोग डीसीएफ वगैरह कर सकते हैं, यानी कि आप ये सही है. यहाँ पर डीसीएफ वगैरह हुआ हुआ है और इससे हमारी शेयर प्राइसेस वगैरह निकल सकती हैं। सही है, ये पूरी सही है. वर्किंग होती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले हम ये मॉडल्स करेंगे, फिर हम यहाँ पर जो है पब्लिक कॉम्स वगैरह करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, सही है. डिफरेंट देखें, एक पब्लिक कंपनी कंपैरेबल्स प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन है, फिर डीसीएफ के थ्रू होगा, फिर यानी कि ये फुटबॉल फील्ड ग्राफ है, ये भी यूज होता है, फिर पब्लिक कॉम्स हैं। सही है, तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क है। आ, आ, फिर अगर आप M&A करना चाहें मर्जर एक्विजिशंस के अंदर, वो भी हम देख सकते हैं, ये डीसीएफ है। इसके अंदर आपको ये पूरी आपकी शेयर प्राइस वगैरह आप निकाल सकती हैं। तो जो आपका एकेडी में काम वगैरह था, तो वो हम से बेसिकली यू कैन इजीली टेक आउट एंड कैलकुलेट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी वाई लाइक 2 3 मेथड्स, राइट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है. Yeah.
ये आपका वैक फिर वैक वगैरह हो गया. सो आई मीन दिस इज अ वेरी सही है. इनिशियल फेज पे, यानी कि अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग में इफ यू कैन हम्म. जस्ट यानी कि स्क्रैच से किसी भी कंपनी का अगर आप या एक मॉडल बना सकती हैं तो या यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड शेप, राइट. इन अ सही गुड है. शेप मतलब ये है कि हम जिससे एट एंट्री लेवल आपको लाख 1.25 लाख रुपए की सैलरी आराम से मिल सकती है. और उसके बाद आपकी या क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होंगे, यू कैन इजीली मैनिपुलेट एंड इजीली डू एवरीथिंग, राइट. तो आपकी सही जो है. चांसेस ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेज होंगे. सही है. सही तो है. ये बेस लाइन है. और ये बेसिकली ये जो मॉडलिंग वगैरह है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. आई हैव 3 degrees, राइट. सो सही मेरा है. बैचलर्स कंप्यूटर साइंस है, एमबीए एंड एमएससी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है मेरा. I'm सही biased है सही यूके से. सही उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस है लंदन के अंदर. एंड देन आई एम सही है. वर्किंग टीआरजी राइट नाउ. आईबेक्स या का शायद आपने नाम सुना हो. तो जी जी. हाँ, तो आई एम अ डायरेक्टर देयर एज वेल राइट नाउ. सही है. तो कहने का मकसद ये है कि यू आर इन अ गुड हैंड्स, राइट. तो सही आपको इंटरनल और जो है पूरी टेक्निकल बुकिश नॉलेज नहीं होगी. ये एवरीथिंग विल बी वेरी प्रैक्टिकल. सही है. तो सही ये है. फेयर इनफ. तो मेक इस सेंस. किस्म की ये मॉडलिंग होगी. उसके बाद जो है अगर आप ये नहीं करना चाहती तो अगर आप इंटरव्यू स्किल्स अपने डेवलप करना चाहती हैं कि इंटरव्यू भी आपकी स्किल्स जो है हम जैसे योर आंसर वाज नॉट वेरी वेरी कम्प्लिसिट, राइट. उसके सही अंदर है. यानी कि जो इंटरव्यू आंसर सुनना चाह रहा है वो आप नहीं दे रही. यू जस्ट सही है. यानी कि यू आर टोटली हम जैसे अभी क्योंकि इनिशियल फेजेस हैं तो हर या बंदा ये गलती करता है. और या ये है कि अगर आपका एक दो तरीके हैं. देखिए, एक तो आप जो है अभी आप आराम से 1 साल पढ़ें और या उसके बाद फिर इंटरव्यूज देना शुरू करें. फिर आप जब इंटरव्यूज देंगी तो उसमें जब फेल होंगी या फिर जो है आपको 1 1.5 साल लगेगा उसके बाद सीखेंगी. या तो सही एक है. ये है कि अभी से आप काम शुरू कर दें. टू बी वेरी या ऑनेस्ट, ग्रेड्स आर इररेलेवेंट इन दिस सही इंडस्ट्री राइट नाउ. प्रैक्टिकल सही है. नॉलेज होनी चाहिए. आपसे जो बंदा पूछे आपको जवाब आए तो बंदा कहेगा या यार ये बंदी सेट है, ये सही बंदा है. सेट है. अगर 80,000 की नौकरी होगी मैं आपको लाख 1.25 लाख रुपए दे दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये बंदा तेज है. सही है सही कि ये काम सही तेज कर लेगा. मुझे बंदे को शुरू से नर्चर नहीं करना पड़ेगा. इतनी इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है. 24 घंटे आके मुझसे सवाल नहीं पूछेगा. सही सही तो इस किस्म के जो है मैं चाह रहा हूँ कि जो है हम जिससे जो भी मुझसे कोर्स लेता है तो उसको इस या तरह पहले इंटरव्यू स्किल्स में एक तो आप हर इंटरव्यू नेल कर सकती हैं. दूसरी बात सही आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग क्योंकि आप फाइनेंस के अंदर है. फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स ऐसी होंगी कि आप जो सामने बंदा बैठा होगा उससे आप यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन क्योंकि यू सही नो है. हाउ थिंग्स वर्क, राइट. सही तो ये ऑब्जेक्टिव है. तो अगर आप करना चाहती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अगर खाली आप इंटरव्यू के लिए लेना चाहती हैं तो या वो जो है वो मैं करा रहा हूँ एक कोर्स. तो ये ऐसे 1 to 1 सेशंस होंगे. हर चीज आपको क्लियरली या मेंशन होगी. ऑनलाइन सेशंस या होंगे. आपको ज्यादा इधर उधर आने की जरूरत भी नहीं है. मैं आपको सारी सही इंफॉर्मेशन बॉक्स आपको जो भी चीजें हैं और या आपको मॉक इंटरव्यूज 4 5 हम करेंगे कि आप तकड़ी हो जाएं. सही है. Say, तो but I'd first like to do like nail my technical knowledge better because I'm genuinely very distraught about how I struggle with it. Like I'm ओके. सो legitimately टेक्निकल नॉलेज जो है वो मैं yeah दूसरा पार्ट है, राइट. एक तो yeah ये है कि आप खाली इंटरव्यू स्किल्स में हो. तो इंटरव्यू yeah स्किल्स में अगर आप एस कर देंगे आप कंपनी के अंदर तो घुस जाएंगे इंटरव्यू स्किल्स पे, yeah टू बी वेरी yeah ऑनेस्ट. लेकिन वहां जाके आप सफर करेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फिर आपको काम नहीं आता होगा. फिर आप फंस जाएंगे. बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज और फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह क्योंकि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में तो वही है सारा गेम. yeah सही है. बातें करने से तो कुछ भी नहीं होगा. वो फिर वही बिल्कुल फजूल बिल्कुल डेटा एंट्री जगह डेटा एंट्री करवा लेंगे आपसे, कुछ भी नहीं होगा. सही yeah है. yeah तो yeah अगर वो आपने सीखना है तो उसके लिए फिर एक एक्सटेंसिव वो है. तो इट्स गोना okay टेक अराउंड 20 25 आवर्स, राइट, ठीक है ऑफ आवर ठीक है सेशंस, राइट. इसी तरह सेशंस ठीक है होंगे. yeah और वो इसके अंदर फिर आपको स्क्रैच से मैं सारा बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे पूरा डेवलप ठीक है करना है, राइट. ठीक और है वो एक ठीक बार है आप कर लेंगी यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड है. यानी कि अपना टेक्निकली बहुत साउंड हो good जाएंगी. place है. सही एंड देन यू कैन इजीली यार पीएसएक्स से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी आप कंपनी उठाएं, यू कैन yeah मेक मॉडल्स विद इन लाइक पहले
पहले पहले दिन में आपको मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगेंगे, एंड देन सही आहिस्ता आहिस्ता आपको लर्निंग कर्व बढ़ेगा, तो यू विल बी इन अ गुड शेप। अब 2 घंटे में पूरा पूरा मॉडल बना लेंगे पूरी पूरी कंपनी का। सही है, सही तो है। वो है, तो यार उसके लिए ये चीज है कि वो 20-25 hours है, तो आई एम गोना या चार्ज यू अराउंड 60,000 रुपीज फॉर दैट। सही है, ठीक है। और अगर 60 आप या 16? 60, ठीक है, ओके। और जो आपके अगर इंटरव्यू करना चाह रही हैं तो वो या जो है खाली इंटरव्यू के लिए, तो वो 27,000 रुपीज में चार्ज करूंगा। इट्स गोना बी अराउंड 10 hour कोर्स। तो मैं सही आपके है। साथ 10 घंटे इसी तरह और लगाऊंगा, अ, मॉक जो इंटरव्यूज होंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो आपके जो ये मॉडल्स वाले कोर्सेज हैं for which you're charging 60, do you think you'd be willing to accept like deferment payments, like payment जो defer हुई हुई हो, like chop up हुई हुई? नहीं आमिरी से जस्ट टेल मी कि क्या किस तरह आप देना चाह रही मतलब हैं। like parts में? दैट्स फाइन, हाँ आमिरी से। Okay, सही है, ठीक है, fair enough. Yeah, I mean, say, but uh, it's not going to be like a 6 month course, right? of course, of course. It's going to be around 20-25 hours max. I know, but like I tend not to take money from my parents, so like I will have to pay for it खुद, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि like is it possible for you to accept money in parts where I can Yeah, that's pay it on fine. a I mean, say कोई इतना बड़ा issue नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना yeah duration इतना बड़ा नहीं है कि I mean, say, you know what I no mean? but okay yeah I get it yeah So, to be very honest, Anam, अब जब ये आप कोर्सेज लेना, आई एम से 2-3 क्लासेस बाद आपको समझ आ जाएगी कि आई एम से कि ये कितना वैल्यूबल चीज़ है आपके लिए। यानी कि सही आपको है पूरा कोर्स करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप समझती हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन लीव इट, नो इश्यूज। सही है क्योंकि मेरे ठीक है पास आई से आई डोंट, यानी कि आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, बट yeah बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू सो आई विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट एज वेल। of सही है। course हाँ अब मैं yeah ये कोई वो नहीं है कि फ्री का यानी कि खोला हुआ मेरा, है यानी दिस इज नॉट माय जॉब राइट, टू बी वेरी yeah ऑनेस्ट। सो हाँ, yeah तो ये चक्कर है। तो सही है अब आप क्या समझती हैं, आप कब से ये स्टार्ट करना चाहेंगे? I would like to start it, like, and I will have to speak to someone and then get back to you, because even though I love the technical bit, because I'm, like I said, I'm genuinely distraught uske upar. So I would appreciate help that I can pay for. But I will get back to you when can I start it, because I can't really say a yes immediately. But thank you for like the introduction. Acha, this is what you're gonna teach. All right. Um, Okay. ठीक है, मैं आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई हैव अ पेमेंट प्लान रेडी। नहीं तो मैं आई कांट कमिट विदाउट अ पेमेंट प्लान। ठीक है, All right, no issues. So ओके secondly ये है कि ना, अगर आपकी जैसे कोई और भी जैसे colleagues या दोस्त वगैरह हैं जो आपकी या student mates हैं, right? So you can या just bring them in as well, right? ओके So you ठीक है can just, यानी कि आपकी 2-3 एज a group में अगर आप वो पढ़ना चाहें, right? तो that will या give you an help as well, right? And अगर आप 2-3 लोग और लेके आएंगी तो मैं थोड़ा बहुत आपको जो है ना I can give you a discount as well on this. ठीक है, सही है, fair enough, makes sense. I will see if any of that can happen and I will get back to you, because this is something that will be very useful to me. नहीं नहीं आमिर से you cannot survive without this. Currently अभी तो फिलहाल नहीं कर Yeah, of सकती course. क्योंकि technically आप you're like आमिर से, and it's not you Anam, to be very honest, it's most of the students, right? Yeah, So you don't need to worry about कि it's only you. सही. ये हम लोग भी, हमने भी पढ़ा, मैंने भी CBM से No, ही but पढ़ा है, there मुझे are पता है। people that are smarter. ये तो स्मार्टर ऐसे ही होते हैं ना, इस किस्म की चीजों में घुसते मुझे हैं एक लोग। बात बताएं, अच्छा, ये मैं आपको ये बताऊं कि कोई what ऊपर से नॉलेज नहीं आ yeah, रही थी किसी के पास। सही. जी जी बोलें, सॉरी आप क्या बोल रहे हैं? No, हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि like you have a degree, you have 3 degrees, right? What do या you feel is a criterion of understanding, like जब, where have you studied? Do you feel like everything that you've learned is based on the education that you acquired, या नहीं 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 नहीं, to be very honest, I mean, I don't want to say that because you are in the mid of that. yeah But yeah you need to be like, let me tell you that this is just like a membership card for you, right? That's it. Okay, सही that will give सही you an interview, right? It's like
क्लब सही है, इसके अंदर आप यू हैव एक्सेस, तो डिग्रीज आर लाइक दैट, राइट? सही वो आप जहाँ पर भी जाएं, सही अगर आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और सही हार्वर्ड की डिग्री ले लेना, काम अगर नहीं आता जी होगा तो फिर आप फंसेंगे वहां पर, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इज पेइंग यू फॉर द वर्क, एंड इफ यू कैन नॉट वर्क, बिल्कुल तो सारी या आपकी जो हमने से वो फिर वो है, इज इररेलेवेंट। तो हमने से बिल्कुल टेक्निकली यू नीड टू बी स्ट्रांग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा या सीपीएम वगैरह और जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है ना, हमें ये वो एक सर्टेन बस कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, कोई भी वो नहीं है उसका, यानी कि कोई हम जैसे बुक्स पढ़ाए जा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं करा रहे। दिस इज द इश्यू सही हियर। सही अब जैसे आप मेक इंटर्नशिप पे सेंस या नहीं, आप इंटर्नशिप पे भी गई हैं, तो आपसे क्या काम कराया? व्हाट एग्जैक्टली, यानी कि अगर, लिटरली डाटा एंट्री तो दैट्स नथिंग यार, आई मीन टू से दैट्स जस्ट बिल्कुल यानी कि आप इस काइंड ऑफ अ स्कैम, दिस इज नॉट रियल या वर्क। तो आई मीन टू या से फिर आप जब आएंगी फील्ड के अंदर, पहले तो जॉब ढूंढना ही का जवाब है, फिर आप घुसेंगी, फिर उसके अंदर स्ट्रगल करेंगी, 4-5 साल के बाद या आप यानी कि वो पेन एंड सफरिंग से सीखेंगी। तो सही वो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी भी कोई फैमिली में कोई बड़ा है जो अच्छी पोजीशन में है, तो ही इफ ही कैन या गाइड यू एज वेल, या बट ये है कि आप यानी टेक्निकली जो है ना आपको पूरा सपोर्ट करे, जैसे इस प्लान के थ्रू मैं आपको सारा सिखाऊंगा, तो वो सही आई मीन यू आर, यानी कि आप जब अपना बैचलर्स करके निकलेंगी, मेरे ख्याल से अगर आपके इंटरव्यूज हो गए, you will या easily get a job before your bachelor's, and not a job of सही 20,000, 25, 35,000 rupees. It's going to be a या like more than 80 के लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाह होगी। सही सही मेक सेंस Yeah, Charlie, it was wonderful talking to you, and thank you for your critique. It really did help, and it is an eye opener. I will get back to you with a payment plan, inshallah, and tell you how can I work it through with my university, and इसको कुछ करते हैं ठीक है चलें जी, सही है, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, okay अल्लाह okay हाफिज। thank you for your time thank you You're welcome जी, Allah अल्लाह हाफिज। Hafiz